Hello everyone, welcome to this lecture. We have discussed in our last lecture and I have uploaded a video where you can find what is Scopus document type. If you have not gone through that particular video, please go through it. I have kept it in the I button. So आज हम देखेंगे Scopus में कैसे अकाउंट हम रजिस्टर कर पाएंगे, how we can create अकाउंट और अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम Scopus में कैसे डेटा उसको हम फैच करके और एक्युमुलेट करके अपना प्रोफाइल बिल्डअप करेंगे. As you can see here, this is the scopus.com. You can go to this particular website that I think you all know. Now we'll go to this create account. When we'll click this create account, then it will take us to another web page where either if you have already some account, then you can go through that account like normal login, you can do it, or else you want to set up, then you have to use another account. So you have to click on the another account, then it will take us to like another page where you have to put your email ID through which you want to create a new account. I will recommend to use your personal account or any one account where all the if you have made any publication, you have used that particular email ID, so it will be easy to accumulate or to gather the data and to link to that particular email ID, or let's say to that particular account. So I'll be using another account for this demonstration purpose, like how to create account. So let's take this account. तो इसके थ्रू हमारा I have not created any or register मैंने नहीं किया है पहले, तो अभी email हो गया. Then you have to put your name, so Akash, Kumar, then Bhoi. Okay, then you have to set a password. Okay, it is so strong, so fine. So then click on register. So now you can able to log in. तो अभी हम log in करेंगे वो that particular email ID जिसके थ्रू आपने अभी हमने registration किया है. So if you have not yet registered, so you can do that. If you have already a account, so no need to do any further registration. तो अभी login हो गया है, as you can see here with that particular email ID जो मैंने अभी register किया है. Author search sources, but you may not find the search option where you can able to search for the institute and for the individual profile, but you have author search which will be limited again. We have discussed in our last video जहाँ पे कि आप ऑथर सर्च कर सकते हो. जैसे कि अभी हम सर्च करते हैं, let's say I want to do a search with the last name Akash Kumar, then affiliation, you have to put your current affiliation. If you have your ORCID ID also, that you can put and you can perform a quick search, or else with name also you can do. So once you do it, so it will take you to सर्च लाइक जिसको आप यहाँ पे आप सर्च करना चाहते हो उस पर्टिकुलर ऑथर के पास वो ले जाएगा. फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस आई हैव जस्ट आई हैव मेड द सर्च विथ माय नेम. तो यहाँ पे आपका क्योंकि आई हैव क्रिएटेड दैट अकाउंट विथ अनदर ईमेल आईडी, सो यू कैन सी. सो लेट्स से हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम अभी ये हो गया जो आपने सर्च परफॉर्म किया. सो ऑथर सर्च यू कैन डू, यू कैन चेक अनदर ऑथर, योर कलीग और समबडी else author detail also, like what else you can able to know उनका Scopus जो ID है, what is the Scopus ID, as you can here I have just highlighted, this is the ID, like author ID equal to, तो ये हो गया आपका Scopus ID. The same ID can be used at different platform, like to for kind of recognition when जब हम बोलते हैं, so that is the Scopus ID.
तो यहाँ पे ऑर्किड आपका लिंक हुआ है इस पर्टिकुलर अकाउंट पे। जो हमने अभी क्रिएट किया है उसके लिए, इस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए, लेट्स गो टू दिस, यू नो, you can check out your free author profile only, because that is limited search, एंड जनरल रैंकिंग भी आप देख सकते हो जो फ्री सर्च में आता है, बट आप इंस्टीट्यूशनल सर्च हम परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज आई एम, एज ऑफ नाउ आई एम नॉट येट authorized or given that access to perform that particular search, तो वो अभी नहीं कर सकते, बट हम ऑथर सर्च एंड जो जनरल सर्च है, स्कूपस मैट्रिसेस और द रैंकिंग है जनरल को, वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, सो दैट इज पॉसिबल। फॉर दिस जनरल सर्च व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट, क्योंकि मेरे केस में मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, तो यहाँ पे वो ऑलरेडी शो करेगा मेरे डैशबोर्ड पे, और मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। बट फ्रेश जब अकाउंट आप क्रिएट करोगे तो आपको लिंक करना है विद, यू कैन एड ऑन, आपका जितना प्रोफाइल है, like orchid के through आप kind of they have the integration, and the article can be fetched to your Scopus, and only the Scopus index article or the journal or conference paper will be registered with your name. So when if you want to check the privacy settings, you can click on this particular link and it will take you to this page where you can see now. Here it is mentioned that it is not connected, my profile is not connected. So what I have to do is I have to give a search, मैं सर्च करूंगा एंड फिर मैं उसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा, बिकॉज स्कूपस आपका अकाउंट कब क्रिएट होगा, जब आपने कुछ पब्लिश किया है which is indexed in Scopus, then it will be automatically, it will be created, the publication will come under your name, but you have to make the alignment, और उसको आपको प्रोफाइल को बिल्डअप करना है। तो यहाँ पे what you can do, मान लीजिए आपने पहले पब्लिकेशन कर चुके हैं and you have your ORCID ID, so either you can, if you know the author ID, जैसे कि मुझे मुझे मेरा author ID पता है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने आपको, जस्ट अभी ही बताया था ऑथर आईडी क्या है इसको पसंद, यहाँ पे उसके थ्रू आप सर्च कर सकते हो, कि ऑर्किड आईडी के थ्रू आप सर्च कर सकते हो। सो लेट्स सर्च विथ ऑर्किड आईडी ओनली। तो ऑर्किड आईडी के थ्रू मैं जब सर्च कर रहा हूँ तो इट विल अगेन टेक मी टू दिस पर्टिकुलर लिंक। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, लेट्स सपोज। सो अभी आप यहाँ पे आके अपना ईमेल आईडी को आप लिंक करा सकते हो, मल्टीपल ईमेल आईडी आल्सो कैन बी लिंक्ड एज आई हैव शोन। तो वो हो गया, तो फिर आपका आप चेक कर लो आपका जो एफिलिएशन है वो सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में जाके, इन दिस एडिट प्रोफाइल में जाके आप यहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं, एंड यू कैन link your ORCID ID also, and after some time it might take some time to build that matrices which you can see at this side, so that will also come, it will be updated with time to time, and आपका citation, आपका co-author, everything will come here. So this is where you can see here very interesting thing, because I'll be preparing another video with my older account, जहाँ वो अकाउंट के थ्रू इफ आई लॉग इन, तो आई हैव बेटर एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर स्कूपस, जहाँ पे कि मैं ऑथर सर्च भी कंप्लीट कर पाऊंगा एंड इंस्टीट्यूशनल सर्च भी कर पाऊंगा, जो कंप्लीट एक्सेस होता है। बट हियर यू कैन सी, बिकॉज आई हैव क्रिएटेड इट फॉर दिस डेमो पर्पज, व्हाट वी हैव हियर इज you have limited search, even though I'm checking my, or you want to check another author, so you have only 10, I think 10 document can be shown over here, and which you can see, and even you want to download it, I do not know whether that is also not possible here, but you can download, and you can all that thing can be done when you have a direct access to Scopus
and that also will be discussing in another video. Soon I will be preparing another video जहाँ पे कि with reward, as I was discussing, आप कैसे Scopus के through, you can able to download, you can view your document, and you can view institutional profile as well. So hope you like this particular video. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, please do it, because it will motivate to prepare such video. And thank you for watching. Thank you everyone.